जिनको वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स के इर्द गिर्द के जितने भी स्पीशीज़ है उनको देखना है, जानना है, फॉर देम दिस इज़ द बेस्ट प्लेस. I am an ornithologist and a wildlife videographer. I am fascinated by nature and love admiring it. I make wildlife videos and publish it so that people can also admire nature sitting at home. I also like to explore the unexplored or less explored destinations for which I do not mind taking the extra mile. If you like my efforts, then do subscribe and motivate me. हेलो एंड वेलकम टू रेड्स वर्ल्ड. आज के सफर में हम चल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स के एक लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पे, बंडा एंड अंबोली, जो कि है महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक बॉर्डर के पास. हमने ली है मुंबई से ट्रेन सावंतवाड़ी के लिए. सावंतवाड़ी इज द नियरेस्ट स्टेशन फॉर बंडा. After getting down at Sawantwadi, we left for Banda. 30 kilometers journey passed in a jiffy as we kept watching the scenic views of natural rivers and small waterfalls visible on roadside created by the current monsoon season. We reached Birre's Homestay and were mesmerized by the location. It is amidst the Banda Forest and a perfect habitat for birds. The ancient brick house was very neat and clean. The rooms had the basic necessities and satisfactory. Our room had a balcony and we were stunned with the view. Just outside our balcony, we were welcomed by the vigorous sunburn, which was tripping and jumping around the banana leaves. We could hardly take a shot when we also spotted a nest of the black-lipped monarch couple. The male was found performing his duty and incubating the eggs. Just further apart from the homestay, we also saw a pair of Sri Lankan frogmouth. The couple was difficult to spot as they camouflage with the tree perfectly. The males are grey while the females are rufous colored. The female waved her tail on seeing us as if the couple was greeting us open-heartedly. Post-lunch, we took off for our birding journey. Our first stop was the Garbhgriha temple on the small hill. It is a perfect viewpoint and we could see the entire forest from here. Also, the height of the temple was such that we could see the canopy of Banda Forest. If the glimpse of the small forest is so beautiful, we can imagine how beautiful the entire Western Ghats would be. We were entering the temple. A lapwing mom got afraid and gave calls to her chick. The fluffy little chicks rushed to their mother and mom covered the little chicks with her feathers to protect them. Later we saw a white-cheeked barbet. It was staring at us in curiosity. It is easier to trace this bird due to constant voice notes it produces. While we were watching the canopies to trace birds, suddenly a rufous woodpecker flew to our nearest treetop and started screaming to attract our attention. It stayed there for sufficient time watching us, as if it wanted itself to be photographed nicely. Later we saw a tiny Nilgiri flower pecker dancing around the close by bushes for a longer time. This gave us ample time to take its videos. It seemed as if it was inquisitive of our presence, trying to know the reason for our presence. A blue-faced malkua caught our eyes. It is a very shy bird and difficult to spot. As soon as we got an eye contact,
It moved away inside the dense tree. On our return trip to the homestay, we saw the Indian scimitar babbler. It was very active and making calls in search of its partner. It was lovely watching this sight. As we moved ahead, we saw the monsoon bird, the Indian pitta, also known as navrang in Hindi. The beautiful 9 colors were very apparent. It was making calls, but we missed to record it. Further, we saw the orange-headed thrush sitting on a branch which was quite low. It didn't mind us walking quite close to it. Nearby, we saw an orange minnow female which had caught a butterfly. We decided not to disturb it and moved ahead. हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हमारे साथ है प्रवीण जी और अभिषेक जी। प्रवीण जी हमें बताएंगे यहाँ के जंगल के बारे में और यहाँ के बर्ड्स के हैबिटेट के बारे में। इधर मिक्स हैबिटेट है, यानी जंगल है बहुत, और प्राइवेट प्लांट्स भी इधर बहुत मिलते हैं। बर्ड स्पीसीज यानी वेस्टर्न घाट में जो मिलने वाले जो स्पीसीज हैं वो बहुत से स्पीसीज हमारे इधर में मिल जाते हैं। यानी आप फॉरेस्ट में जाओगे तो मलबार ट्रोगोन, मलबार बारबेट बोलो। उसके बाद में आउल्स का स्पीसीज है। आउल्स हमारे इधर 8 प्रकार के आउल्स मिलते हैं। उसके बाद में ग्रासलैंड्स है, और ग्रासलैंड्स में भी बहुत बर्ड्स मिलते हैं। पास में 30 किलोमीटर पे हमारे पास वेटलैंड्स है। समुंदर के आसपास मिलने वाले जो बर्ड्स है वो हमारे पास मिलते हैं। ऐसा मिक्स फॉरेस्ट है हमारे इधर, और सब बर्ड्स हमारे इधर मिलते हैं। लगभग 300-350 स्पीसीज हमारे इधर मिल जाती है। तो ईयर अराउंड यहाँ पे 350 स्पीसीज मिलती है। और जब भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसका क्या सीजन होता है? माइग्रेटरी बर्ड्स का सीज़न अक्टूबर-नवंबर होता है, तब से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो फॉरेस्ट में कुछ वॉबलर्स आते हैं, थ्रश आते हैं, और समुद्र के पास वेडर्स आने चालू हो जाते हैं। तो हमारा एरिया जो है ना अभी भी एक्सप्लोर इतना नहीं है, तो और उसमें बर्ड्स की थोड़ी ये हो सकती है, यानी उसमें ऐड हो सकते हैं, काउंट बढ़ सकता है। इसको छोड़ के भी हार्पिंग का अभी नया बांदा एरिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हार्पिंग में फ्रॉग्स हो गया, क्रैब हो गया, किंगफिशर, स्नेक्स हो गया, लिजर्ड, सैलामेंडर्स हो गया। तो ये सब भी स्पीशीज काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। तो अदर दैन बर्डिंग हम थोड़े एम्फीबियंस को भी यहाँ पे देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में हमें क्या क्या दिखता है? वाइल्ड लाइफ में तो दिन में ज़्यादातर नहीं मिलता, लेकिन रात में आप जाओगे तो आपको लेपर्ड मिल सकता है। टाइगर का हमारे इधर साइटिंग है, टाइगर मिल सकता है। उसके बाद में स्प्लेंडर लॉरिस का हमारे इधर साइटिंग है। और बहुत से जो एनिमल्स है वो एलिफेंट भी हमारे पास है, एलिफेंट भी हमारे पास है। ऐसे बहुत से जानवर हमारे पास मिलते हैं। फेमस फॉर मलाबार जायंट स्क्विरल एज वेल एज पाम सिवेट, इंडियन पाम सिवेट। तो दीज टू आर काफ़ी पॉपुलर है, और इफ समबडी वांट्स टू कम इन बांदा दे विल श्योरली गेट इट। मेन चीज़ जो यहाँ पे बोलने लायक है वो है हैबिटेट। देर इज़ फॉरेस्ट बेस्ड हैबिटेट, जैसे प्रवीण जी ने बताया। देर इज़ विलेज बेस्ड हैबिटेट, जो विलेज के आसपास के बर्ड्स है। एंड देर इज़ ऑल्सो सी बेस्ड और बीच बेस्ड हैबिटेट। सो जिनको वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स के इर्द गिर्द के जितने भी स्पीशीज़ है उनको देखना है, जानना है, और एक अच्छा सा फोटोग्राफी सेशन करना है फॉर देम। दिस इज़ द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, जिन्हें भी यहाँ पे आना है आप अभिषेक जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी और प्रवीण जी हमें यहाँ पे बहुत अच्छी साइटिंग करवाते हैं। एंड अभी हम चल रहे हैं ओडी केव देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा कितना लक है ओडी केव। प्रवीण जी, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से पेड़ है जो इतने सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं? कौन से मेन स्पीसीज ऑफ पेड़ है यहाँ पे? पेड़ का स्पीसीज यानी आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है, यानी आम जो पुराने वाले आम होते हैं वो ज़्यादा है। उधर इंसेक्ट्स वगैरह बहुत होते हैं। उसके बाद में स्पाइकस ट्री बहुत ज़्यादा पे है, तो वो फल लगते हैं, तो वो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। मेनली पिजन्स टाइप के, ऑरेंज रेस्टेड ग्रीन पिजन हमारे इधर मिलते हैं। वो महाराष्ट्र में तो बहुत रेयर माना जाता है, वो हमारे इधर इजीली मिल जाता है, और अच्छे फ़ोटो मिल जाते हैं उससे, हाई लेवल पे आपको फ़ोटो मिल जाते हैं। और ऑर्किड्स के बहुत से ऐसे ये है, वो इधर, हाँ, वो हमारे इधर मिल जाते हैं। यानी वेस्टर्न घाट के जो ऑर्किड बहुत रेयर ऑर्किड होते हैं वो हमारे इधर मिल जाते हैं।
फंगस का स्पीसीज है, आपको लाइकेंस वगैरह वो भी हमारे इधर मिलता है। इसको छोड़ के भी दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर काजू के जो प्लांटेशंस हैं उसके लिए। सुपारी के प्लांटेशंस काफ़ी पॉपुलर है। कोकोनट्स एज वी ऑल नो वेस्टर्न घाट के जो सी साइड में है, कोकोनट्स इज़ वेरी पॉपुलर एंड एवरी अदर स्पीशीज दैट इज़ प्रॉब्ली प्रेजेंट इन वेस्टर्न घाट्स। On our return to the homestay, we saw a common tailor bird near our balcony. Light wasn't good enough, but we managed a small video. Next day morning, we were more exciting than thought about. The greater hornbill had came at our homestay to wish us good morning, and we weren't prepared with our gears for it. Hence, we could only take some shots and not videos. Next day morning was more exciting than even thought. When we began our journey, we saw a yellow-eyed babbler. Brown above and white below, it had a rufous wing. The eye were simply majestic. We also saw a red drum swallow resting on a wire. A grey jungle fowl was walking and running along the road. It was a distant relative to the domestic chicken and endemic to Indian peninsular region. The chestnut-headed bee-eater was seen sitting on a wire as well. We also saw a grey-bellied cuckoo, which is most found near the open forest area. At the grassland area, we spotted Malabar crested lark. As we moved ahead, we saw a mixed flock of white-rumped munia and black-throated munia. We also saw a coppersmith barbet. There were certain birds for which we could take only pictures as they were too fast for our videography. On account of heavy rainfall, we had to end the trip. However, these memories will stay forever until we build new memories. Do subscribe for watching more such videos and less explored destinations.